Good morning students. In the last class we have studied about the structure of cell. इसमें हमने तीन पार्ट्स पढ़े थे बेसिकली, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. ठीक है, अभी क्या है, सेल में न्यूक्लियस कैसे ऑर्गेनाइज्ड है. ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, सेल इज ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, है ना. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, on the basis of nuclear organization, cells are of following type. ओके, तो सबसे पहला आता है इसमें प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड आता है यूकैरियोटिक सेल. तो बच्चों पहले प्रोकैरियोटिक पढ़ेगी, उसके बाद फिर हम लोग यूकैरियोटिक पढ़ेंगे. ठीक है, अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं, देखो बायो में एक कॉमन रूल मैं आपको बता रहा हूं, जब भी हम न्यूक्लियस की बात करेंगे तो वी विल यूज द टर्म कैरियोन. इन बायोलॉजी कैरियोन्स मींस न्यूक्लियस. ओके, एंड दिस प्रो मींस प्रिमिटिव. तो कहने की बात है कि प्रोकैरियोट में कैसा न्यूक्लियस है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है. व्हाट इज प्रिमिटिव न्यूक्लियस आप समझते हैं. देखो अगर आपको याद हो, इफ यू रिमेंबर, वी हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल जिसमें हमने ये बताया था बीच में न्यूक्लियस होता है एंड दिस इज सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज साइटोप्लाज्म. ठीक है, अब देखो क्या होता है, जैसे ये न्यूक्लियस सेंटर में, तो ये तो ह्यूमन सेल हो गया या एनिमल सेल हो गया जहां पे न्यूक्लियस सेंटर में रहेगा. अभी देखो आपको पता है कि न्यूक्लियस की बाउंड्री को हम क्या बोलते थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. देखो अगर मैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटा दूं, अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही ओपन पड़ा हुआ है ना. तो ऐसे सेल को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक या फिर प्रिमिटिव न्यूक्लियस. द सेल्स व्हिच हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस. प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब यहां पर क्या होगा, यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रहेगा, इज एब्सेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपका 9th 10th 11th 12th चारों क्लास में आपको काम आएगा. ठीक है, सो सी न्यूक्लियस में इफ देर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट मीन्स इट इज हैविंग अ प्रोकैरियोटिक. द सेल्स इज प्रोकैरियोटिक, दैट मीन्स इट इज हैविंग अ प्रिमिटिव न्यूक्लियस. सो प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, and primitive nucleus means there is no nuclear membrane. So cells are not well organized because of the absence of nuclear membrane. So they are known as prokaryotic cell. And the example is bacteria and blue green algae. The example of prokaryotic cell is bacteria and blue green algae. Now we will write it in an organized way. अभी हमने कंसेप्ट समझ लिया. नाउ सी, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक लिखते हैं. तो प्रोकैरियोटिक सेल, द organisms which have prokaryotic cell are known as prokaryotes. So the organism which have prokaryotic cell are known as prokaryotes, and the example includes bacteria and BGA. It means blue green algae. So the examples of prokaryotes are bacteria and blue green algae. And the main definition, the cell which do not have, this is very important, which do not have well organized nucleus. ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं. which do not have well organized nucleus ड्यू टू एब्सेंस, किसका एब्सेंस, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन.
The cell which do not have well organized nucleus due to absence of nuclear membrane is called prokaryotic cell, and the organism which have prokaryotic cells are known as prokaryotes. Example, bacteria and blue-green algae. Student, this topic is very important in terms of your higher studies. 9th, 10th, 11th, 12th बहुत जगह ये कंसेप्ट आपको यूज होएगा. आपको ध्यान रखना है प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस डू नॉट कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. So genetic material is not bounded by any membrane. So the cell is known as prokaryotic cell. Now the next type is next type of cell is eukaryotic. Just opposite. U means advance and karyote means again nucleus. Now the nucleus of eukaryotic cell is well organized. Why? Because of the presence of nuclear membrane. So they are known as advanced nucleus or true nucleus. अगर हम अगेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहां पर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट and rest of the structure is same, cell membrane, and again this part is cytoplasm. So in the case of eukaryotic cell, nucleus contain nuclear membrane, nucleus contain nuclear. So in eukaryotic cell, nucleus contain again nuclear membrane. I am repeating this point because it is most important for exam point of view. If you are writing the definition of eukaryotic cell, there must be a point of regarding the nucleus, that nucleus contains nuclear membrane. Now we can write it in an organized way. Now see how you will write an exam. Eukaryotic cell are cells which have a well organized nucleus because of the presence of nuclear membrane, है ना. This is important because of the presence of. देखो, bio is all about understanding the point and then you can write it in your own language. What we are doing in this lecture, what I am making you understand regarding the structure, and the same thing we are writing in the notes. So there is nothing difference, there is no difference about that. You have to understand the concept and then you have to write whatever you have understood. Just write it in your own words, although grammatical it should be correct. Now see, organisms which have eukaryotic cell, again they are known as eukaryotes, and the examples are plants, animals, protozoa. This term I have already explained in microorganisms and fungi. So apart from bacteria and blue-green algae, rest all other organisms comes under eukaryotes. So students, in exam we may ask you about the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. Question can be come like this. You have to write 3 points of differences between prokaryotic and eukaryotic cell. So I have explained you the entire concept, what is prokaryotic and what is eukaryotic cell. You need to note down the 3 points explained in both the cell in your notebooks. Okay. Now let's do some application based questions. There is one concept known as protoplasm. What does this term actually means? See, protoplasm means the living content of cell. Protoplasm is the living content of cell. Actually, nucleus plus cytoplasm. Nucleus plus cytoplasm makes protoplasm.
This is for competitive exams. Question can be asked in the form of protoplasm ki what does the protoplasm actually define? So nucleus and cytoplasm of cell makes the protoplasm. Okay students, so in today's lecture we have understood the types of cell on the basis of nuclear organization, prokaryotic and eukaryotic cell. Although we have studied the example part also, now you have to read the same topic from your NCERT after watching this video lecture, and in the next class we will be doing the cell organelles. Okay, so till then students, stay home, stay safe. Thank you.